Good morning students. Today we will study subject Maths chapter 13 topic ways to multiply and divide. Now we are in second part of this chapter. In first part we saw the ways to multiply. In this part we see the ways to divide. So students, take your notebook and open your textbook and solve the sum with me. See here question number 4, divide as per examples. Here first example is given here, 976 divided by 16. It is our simple method as we are doing. जैसे हम करते हैं वैसे ही ये मेथड है. First one is see here 16 6 are 96, then 7 minus 6 is 1, then 16, then 16 ones are 16 and 0 0, quotient 61 and remainder 0 0. In same way divide by 36, 956 divide by 36, so 36 2s are 72, 5 minus 2 is 3 and 9 minus 7 is 2. Then 6, then 236, 36, 6 are 216 and here 20 is remainder and question is 26. In this way we solve the remaining questions. Yes, question number 1 and its first sum 476 divided by 70. First we write in such way, first inside 476 and outside 17. Then we say the table of 17. If you don't know table of 17, so first you write one side write one side table. आप एक साइड टेबल लिख लोगे. In this way, 1s are 17, 2s are 34, 17 3s are 51, 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are 102, 17 7s are 119, 8s are 136, 17 9s are 153 and 17 10s are 170. Okay, then we start divide 17 1s are 17 and 2s are 34, 3s are 51 and here is 47. So 3s are 57, बढ़ गया number, so we go back one step, go back and divide by 2. So we write here 2. Then 2s are 34. Then 7 minus 4 is 3 and 4 minus 3 is 1. Then 6 here, नीचे हम 6 को लेके आएंगे. Then 136. Then you know the 17 8s are 136. So we write here 8s are 136. Then minus 0 0 and 0. So our question is 28 and remainder is 0. So we write here question 28 and remainder 0. Then second one 251 divided by 19. So we write 551 inside box and 19 outside. We write table here, 19 1s are 19, 2s are 38, 19 3s are 57, 19 4s are 76, 19 5s are 95, 19 6s are 144, 19 7s are 133, 19 8s are 152, 19 9s are 171 and 19 10s are 90. Then we start solve our sum. Then 19 1s are 19, 2s are 38 and 3s are 57. 57 देखो बढ़ गया तो हम एक कदम पीछे चल जाएंगे. We go one step back. So here is 2s and here is 38. So 5 में से 8 नहीं minus होते, so we carry 1 here and here is 4. So 15 minus 8 is 7 and 4 minus 3 is 1 and then 1. Then 19 9 side 171. So 19 9s are 171 minus कर देंगे 0 and 0. Okay, so our question is 29 and remainder 0 0. Okay, now third one, see 648 divided by 36. So we write 648 inside and 36 outside. We don't know the table of 36, हमें नहीं आता है, so we write one side
So 36 ones are 36, 36 twos are 72. और आप बोलोगे मिस हम कैसे लिखें 72, 36 twos are. So you multiply 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get 72. In same way 36 you multiply by 3. आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, you will get 108. Means 36 fours are 144, 5s are 180, 36 sevens are 252, 36 8s are 288, 9s are 324, 10s are 360. ओके, अब हमारे पास पूरा 36 का टेबल है. नाउ वी स्टार्ट. 36 1s are 36, 2s are 72 and here is 64. मतलब 72 बढ़ गया, so we go one step back. It means 1s are 36, 1s are 36. So we carry here. We not able to minus 4 minus 6 नहीं हो सकता, so we carry. Here is 14 and here is 1 less, it means here is 5. So 14 में से 6 minus, it means 8 and 5 minus 3 is 2 and इसको हम नीचे लेके आएंगे. Now we have 228 and we know 36 8s are 228. So we write here 8s are 288 माइनस कर देंगे. सो अवर रिमाइंडर इज 00 and question is 18. Okay, now here is your fourth one. 819 is divided by 63. 63 से हमें डिवाइड करना है. वी डोंट नो द टेबल ऑफ 60, तो मल्टीप्लाई करके उसके आंसर फाइंड करेंगे. 63 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 63. 63 को 2 से करेंगे, देन वी विल गेट 126. 63 3s are 189, 4s are 252, 5s are 315, 63 6s are 378, 7s are 441, 63 8s are 504, 63 9s are 567 and 63 10s are 630. And here is first one is 81. Okay, and 63 outside, so 63 1s are 63, 63 2s are 126. नंबर बढ़ गया, so we go one step back. हम पीछे चले जाएंगे. 1s are 63. 1 में से 3 नहीं माइनस हो सकता, then we carry here. Here is 11 and here is 7. So 11 में से 7 minus, sorry 11 में से 3 minus, so we will get here 8 and 7 minus 6, it means 1. इसको हम नीचे ले आएंगे, then 189. You know 63 3s is 189, so we write here 3 and 189 minus कर दिया 0 0. So our question is 13 and remainder is 0 0. See here your fifth one sum. 950 डिवाइड बाय 38. ठीक है, तो हम 950 को अंदर लिखेंगे, 38 आउटसाइड. वी राइट द टेबल. हम एक साइड टेबल लिख देंगे. 1s are 38, मल्टीप्लाई करेंगे. 38 इंटू 2 वी विल गेट 76. फिर 38 इंटू 3 114. ओके, फर्स्ट नंबर इज 38. 38 डिवाइड बाय 950 एंड हियर इज 95. हम टेबल देखेंगे. 1s are 38, 2s are 70, 6 3s are 104 and here is 95. so we go back. हम एक कदम पीछे चल जाएंगे. इस 2s are and 76. ओके, 5 में से 6 नहीं माइनस हो सकते, so we carry and here is 15 and here is 8. so 15 minus 6 is 9 and 8 minus 7 is 1 and then here is 0, so we will get 9. Now we number is 190. So 38 5s are 190. So we write here 2 and 38 5s are means 25. Okay, minus कर देंगे 0 0. Our question is equal to 25 and remainder is equal to 0 0. Okay, now I hope you understand the division. So question number 6, 966 divided by 46, it means 6th one, and here is 7th one.
and 8th one, and I show you, and here is 9th one, 523 divided by 16 and 683 divided by 23, 770 divided by 33, 875 divided by 44, 925 divided by 56 and 606 divided by 26. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 sums divisions. It's your homework. Yes, question number 5, that is second method of division, divide as per example. Here example is given 672 divided by 21. Okay, so first we write inside 672 and 21 outside. 21 का टेबल नहीं आता है तो हम साइड में लिख लेंगे. ओके, सो 21 1s are 21 and 2s are 42 and 3s are 63. So here is 67. तो हमने 3s लिया, so we write here 3s and here is one number is left. हम इधर एक या तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं. Here we take 21 is not divisible by 6, so we take 67. It means 10th लिया. Okay, दो नंबर लिए. So here is second number is 10th, so we write here 0. और अगर दूसरी तरीके से समझना है तो 3s are 63. ओके, हियर इज 2, एक बाकी रह जाता है तो वी राइट देयर 0. हमने वहां पे 0 लिख दिया. सो ओके, सो 7 minus 3 is 4 and 6 minus 6 is 0. फिर हम इधर 2 को डायरेक्ट जो पहले लेते थे उसके बदले इधर 0 डालेंगे और फिर हम लिखेंगे, और ये 0 हमने कहाँ पे डाल दिया, इधर भी. सो वी गेट 42. सो 21 2s are 42. सो 2s are, तो हम इधर प्लस साइन दे देंगे एंड राइट देयर 2, देन 0. 2 minus 2 0, 4 minus 4 is 0. So our 30 plus 2 is 32. So our question is 32. It means our answer is 32 and remainder is 0 0. And see here second one, 864 and divide by 6. Here we take here 8 is divisible by 6. बड़ा नंबर है, डिवाइड हो जाएगा, so we take only 8. So दो नंबर हम छोड़ रहे हैं. सो वी राइट देयर 100, और इधर हम दो नंबर का जो छोड़ रहे हैं उसके हम क्या लिख देंगे, 0 0. 8 1s are 6 1s are 6, तो हम 8 के नीचे 6 डाल देंगे. ये दो नंबर का हमने 0 0 डाल दिया. सो 8 minus 6 is 2 and 64 एंड इधर 264 हो गया. ओके, अब हमारे पास इधर कितना है, 26. ओके, तो 26 हम कितना ले रहे हैं, 26, इसको छोड़ दे रहे हैं. सो 6 4s are 24. सो 6 minus 4 is 2. इसको हमने छोड़ा था, उधर हमने क्या लिख दिया, 0. सो हियर कितना 4s लगाया और ये 0 हमने किधर डाल दिया, 40. सो इधर हमारा हो गया 40. सो इधर 6 minus 4 is 2 and 4 minus 0 is 4. सो हियर is 24. ओके, तो इधर अब एक ही नंबर ले रहे हैं, 24. 6 4s are 24 and 24 minus 24 is 0. So our question is 140. 140 plus 4, it means 144. So our answer is question 144 and remainder 0. Okay, अब 1000 डिजिट में आ जाते हैं. See here 9872 divide by 8. Okay, here is 9. So first we take one digit. बाकी के 3 डिजिट छोड़ दिए, 1 2 and 3. So we write here 1 2 3 and there also 1 2 3. हमने 3 0 यहाँ पे भी लगा दिए. So 9 8 1s are 8. 9 minus 8 is 1. 8 7 2. Okay, then here we get 18. हम कितना नंबर लेंगे, 18. दो नंबर हमने छोड़ दिया एंड 18 8 2s are 16. 2s जाएगा टेबल में. सो 2s एंड दो नंबर छोड़ दिए तो उसके हम क्या लिख देंगे, 2 zeros. 2 zeros डाल दिए. सो 2s are 16. 8 minus 6 is 2, 7 and 2. ओके, अब हमारे पास कितना हो गया, 27. और ये 2 एक बच रहा है, छोड़ देंगे, उसका हम 0 इधर रख दिया. और 18 3s are 24 and 0 it means 30. ओके, सो 7 minus 4 is 3 and 2. कितना हो गया, 32.
and 8 4s are 32. हम पूरा ही लेंगे 32 0. So see question number 5th and its first sum 918 divided by 17. So we write 918 in inside and 17 outside. If you know the table of 17, so you don't write here, and if you don't know the table of 17, then you write here. Okay, so we start 17 and here is 9. So it's not divisible, so we take 9 1. It means हम एक number इधर से भी ले लेंगे. Okay, so here is 91 and here is our table 17 5 are 85 and 17 6 are 102. ये बढ़ जा रहा है, so हम एक कदम पीछे चल जाएंगे. So 5 are 85. We write here 5 and here is 85. And see आपने कितने नंबर लिए? 2 नंबर. So we write here 0 और वो 0 जो डाला वो हम इधर भी लिख देंगे. Okay, so 1 minus 5 not possible, so we carry. Here is 11 and here is 8. So here is 11 minus 5 is 6 and here is 68. ओके, ये इधर 50 है. ये जो हमने 2 नंबर लिए थे इसलिए एक 0 डाला और वो 0 इधर भी लिख दिया. और इसको 8 minus 0 it means 8 and 17 4s are. So here is plus sign and 4s are 68 0 0. So our question is 50 plus 4 is equal to 54 and the remainder is 0 0. अब देख लो इधर 15 and here is 4. नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता. सो वी टेक 2 नंबर्स, हम 2 ले रहे हैं. सेंड 15 2s are 30 and 15 3s are 45. 45 बढ़ गया तो एक कदम पीछे चल जाएंगे, दैट इज द 30. देन 2s are and here is 30 और हमने 2 नंबर लिए थे तो वी राइट देयर 20. देन प्लस साइन. ओके, सो 0 1 एंड इधर का भी हम क्या डाल देंगे, इधर 0. सो 5 minus 0 is 5 minus 0 is 5. So 105. Okay, 105 हो गया, ये 0 ही था. 105. So 15 7s are 105 0 0. इधर कितना हो गया, 20 plus 7 is 27. So our question is 27 and remainder is 0 0. Okay, now you see third one. 12 का टेबल. 12 का टेबल आता ही होगा, नहीं आता हो तो इस तरीके से हम साइड में लिख देंगे. ओके, सो 12 1s are 12 and here is 6. नॉट डिविजिबल, सो वी टेक 2 नंबर. हम 2 नंबर साथ में लेंगे. 12 5s are 60 and 6s are 72. बढ़ गया तो 5s में जाएंगे, 5s are 60. ओके, और 2 नंबर लिए तो वी राइट देयर 5. सॉरी 0 5 के साथ क्या डाल देंगे, 0. देन प्लस साइन और इधर भी हम क्या डाल देंगे, 0. सो 8 minus 0 is 8 एंड ये हो गया 0 और ये कितना हो गया, 84. 7 12 7s are 84. Yeah, so 50 plus 7 is 57. तो our question is 57 and remainder is 0 0. अब आ जाते हैं 6 का टेबल. स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल द टेबल ऑफ 6, तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो 6 5s are 30 and here is 3 and here is 6. It's not divisible, so we take 2 numbers. So we write here 5s are, it means इधर कितना लिख देंगे, 50. तो इधर हो गया 30 और इसका ये 0 भी हम कहाँ डाल दिया, इधर. सो here is 4 then 48. then we keep plus sign. तो 6 8s are 48. So our question is 5 plus 8 is 58 and the remainder is 0 0. Okay, 58 question and remainder 0 0. Here fifth one sum 792 9 divided by 4 and 925 divided by 5. ये दोनों सम आपके होमवर्क में है. Question number 5th and its 7th one. 6725 divided by 5. 5 table you know students very well, and here is 6 and here is 5. So 6 is divisible by 5. So 5 1s are 5. ठीक है, तो इधर 1 2 and 3 तो हम इधर कितने लगाएंगे, 1 2 and 3. देन प्लस साइन.
Okay, so here is 6 minus 5 is 1. Then 7 to 5. Then we take here 5 and here is, so we take here 70 and here is 3s are 15. 4s are 20 बढ़ जाएगा तो 3s are 15. So 7 minus and here is 30 and इसके बाद कितने थे 2 zeros, we keep here 2 zeros. Then 7 minus 5 is 2. ओके और ये 2 जीरो का 2 और 5. अब फिर हम क्या कर देंगे प्लस की साइन और अब हम कितने लेंगे 4 जा 20. ओके तो इधर हो गया और ये इसका भी हम क्या लगा देंगे 0. तो अब कितना हो गया 2 एंड हियर इज 5. अब 5 5 जा 25. सो 25 0 0. अब हमारा क्वेश्चन कितना हो गया 1345. So 1 3 4 5. So question is equal to 1 3 4 5 and the remainder is equal to 0 0. Okay, understand? Let's we solve second one, 8th one also. 8 भी हम कर लेते हैं. 4 3 6 8 inside and outside 3. 3 से 4 डिवाइड हो जाएंगे 1 जा. ओके तो 1 2 एंड 3 तो हम कितने जीरो लगा देंगे 3 1 2 एंड 3 1 3 6 8. अब 3 लेंगे प्लस 400 4 सा 12 2 जीरो बाकी 1 इधर कितना हो गया 1 6 एंड 8. अब हम 2 लेंगे मीन्स यार 5 सा 15 इसका एक 0 1 एंड 18 प्लस 6 सा 18. Okay, so 1004 1456. So our question is equal to 1456 and the remainder is equal to 0 0. In such way we divide. Here is 9th one. See your 9th one. 9384 divided by 4. 8426 divided by 2. These two sums also for your homework. Yes, question number 6. Divide as per example by any method. Here is example दिया है, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसा जनरल मेथड जो हम रेगुलर सॉल्व करते हैं दैट आल्सो इज गिवन हियर. ओके सो हियर एग्जांपल 3870 डिवाइड बाय 15. 15 टेबल you know students. So first we write inside 3870 and outside 15. Then here is 38 because 3 is not divisible by 15. Then 38. So 38 के बाद कितने डिजिट रह जाते हैं 2 डिजिट. सो वी राइट हियर 2 जीरो. सो 15 2 जा 30 और ये 2 जीरो. सो 8 87. ओके 87 हो गया. देन हियर इज 0. सो 15 5 जा 75. सो हियर 5 7 minus 5 2 8 minus 7 1 and here 0. ये जो 0 है इसमें आ गया. So we keep here 0. Then here is 120. Then 15 8 are 120 and here is 0. So remainder 0 and question 258. So our answer is 258. Here is general method, regular method जैसे हम solve करते हैं. Every sums 3675 divided by 21. So 21 ones are 21. Okay. 6 minus 1 is 5. 3 minus 2 is 1 and 7 157 हो गया. Then 21 7s are 147. तो हम 7s आ जाएंगे 0 5 minus 4 1 and फिर 5 को नीचे लेके 105. So 21 5s are 105 0. ये जो जनरल मेथड है जो हमने पहले फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू. सो 3675 डिवाइड बाय 25 is equal to 175 is question and remainder is 0. Question number 6 and its first sum 3480 divided by 12. 12 टेबल we know very well. हम अच्छी तरीके से 12 का टेबल आता है. and here is we write first 3480 inside and 12 outside. Okay, so 12 ones are 12, 12 twos are 24, 3s are 36 means बढ़ गया, increase हो गया
and 3 is not divisible by 12, so we take 34. So 12 2s are 24, and after 2 digits, so we keep here 2 0. So here is 180. Okay. So here is 108. Then here is plus sign. 108. 12 9s are 108. 0 0 0. And here this one 0, so we write here 0. और इधर हो गया, then again 0, then 0. So 290. So quotient is equal to 290 and remainder is 0 0. Okay, see second one. 2464 डिवाइड बाय 22. 22 का टेबल नहीं आता है, फर्स्ट वी राइट हियर टेबल. हम लिख लेंगे 21 2 जा 41 जा 22, 2 जा 44, 3 जा 66, 4 जा 88, 5 जा 110. ओके, इन सच वे वी राइट अप टू 22, 10 जा 220. ओके, सो हियर जनरल मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं. सो हियर इज फर्स्ट 24. ओके, इस मेथड से ही कर देते हैं. हियर इज 24 एंड हियर इज 22. 2 is not divisible by 22, so we take 24. So 21 1s are 21 and here 2 0, so we write here 2 0. Okay, so 4 minus 2 and 2 minus 2 is 0, 6 and 4. Okay, then keep 100 plus sign and 20, here is 26. 22 divided by 26, it means 1s are और इसका एक 0. Okay, so 4 near 1 0, so 44. So here 22 2s are 44. So 100 110 and 2, it means 10 plus 2 12. So 112 its questions and remainder is equal to 0 0. Okay, here is third one, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one, 8 1, 9450 divided by 35. All these sums for your homework. ये सब सम आपके होमवर्क में है. सेम मेथड से करने हैं, सिंपल मेथड से भी आप कर सकते हैं. सी हियर नाइन्थ वन 4 5 5 6 divided by 34, that also for your homework. And this is 7 8 6 6 divided by 57. ये हम चलो जनरल मेथड से करते हैं. एंड इट्स बिगर टेबल, तो मैंने बोला चलो आई थॉट आई विल डू, मैंने सोचा मैं ही करा देती हूँ. 7 8 6 6 0. ओके, सो फर्स्ट 55, 7 is not divisible by 57, so 57 and here is we take 78. So 1s are 2s are 1 1 4, तो बढ़ गया. So 1s are is 57. So here is 1, here is 2 and then 6 216. Okay, so 17 1s are 57, 57 2s are 114, 57 3s are 171, 57 4s are 228 and here is 260. So we go back one step. So by 3 is 171. Here is 16 and here is 0. Sorry. Yes, question 6 ninth one, 4 5 5 6 divided by 34. It's also your homework. And 7 8 6 6 divided by 57. I solve it here. ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ because here is 57. बड़ा नंबर है. फर्स्ट वी राइट द टेबल. 57 1s are 57, 57 2s are 114, 57 3s are 171, 57 4s are 228, 5s are 285, 57 6s are 342, 57 7s are 399, 57 8s are 456. एंड बस यहाँ तक आपका ज़्यादातर हो जाएगा. देखते हैं. एंड हियर इज 78. हम सिंपल मेथड से ही जाएंगे. 57
Here is 7 is not divisible by 57, so we take 78. 57 ones are 57, 8 minus 7 1, 7 minus 5 2, 216. So 17, 3s are 177 and 4s are 228, so we take 3s are 171. Here is 5 not divisible, so we carry, and here is 1, so here is 4 and 6. Okay, so 57 8s are 456, so we write there 8s are 456 0 0. Question is equal to 138 and the remainder is equal to 0 0. That is our answer. And question number 7, divide and get questions and remainder. Question number 1 2 3 4 5 6 7, 7th one, 6891 divided by 45, 5806 divided by 27. All add sum for your homework. Question number 7, because all sums in same method, आप simple method से भी कर सकते हो. Here is no any example is given, solve in this method, so you may solve in any method. Now I finished my second video here. Let's we meet in third video.